fraction. So in previous class we have studied about Z transform, and we have done a problem regarding Z transform. Along with we will discuss today we will discuss the concept of ROC. And since in the properties of ROC we have seen the ROC cannot contain any poles, so that means there is a concept of poles and zeros. Okay, so can anybody tell me what do you mean by poles and what do you mean by zeros? Anyone? What do you mean by poles and what do you mean by zeros? I think pole zero concept you have already studied in your network theory. Anyone. Anyone? Am I audible? Anyone can tell me what do you mean by poles and what do you mean by zeros? Am I audible now? Yes, sir. Okay. So tell me what do you mean by poles and what do you mean by zeros? Okay, fine. Finally, I have to go. So, in any fractional equation, we have two parts. That is, first is upper portion, second one is lower portion. So, upper portion can be known as numerator or denominator. Numerator. That is denoted by a numerator. And lower portion is known as denominator. Okay, so now poles and zeros are related to this upper portion and lower portion. Okay, so if something can be divided by zero, what will be the answer? That is undefined. Am I right? Am I right? Yes, sir. Okay. So that means lower portion can't be zero. Okay. So this is the trick. Lower portion can't be zero. So if numerator part
will be equal to 0, and whatever equation, whatever value we will get, then this is known as zeros, and it is denoted by 0. Okay? And if denominator will be equal to 0, and whatever value we will get, that is the value of the poles, and it is denoted by cross. So now I am taking an example like z minus 2, z minus 1, z minus 3, z minus 4. So tell me, what are the poles and what are the zeros? Tell me. सपोज 3 और 4 है और जीरो है 2 और 1. Okay. Poles is 3 and 4. Z minus 3, Z minus 4 equal to 0. That's why Z equal to 3, 4. That is poles. And 0, Z minus 2, Z minus 1, that is 0. That is Z equal to 2 and 1. That is zeros. Okay. So I can say poles and zeros of a transfer function are the frequencies. So if I will define this, poles and zeros of a transfer function transfer function are the frequencies for which the value of denominator and numerator of transfer function becomes zeros respectively. So that means poles is associated with denominator, zero associated with numerator. Okay? So now in any equation we have to find out what will be the zeros of the equation, and as per the zero, that means ROC doesn't contain any pole. यहाँ पे आरओसी एनी पोल कंटेंट नहीं करता है, कोई पोल कंटेंट नहीं करता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द zeros, and after finding out we will find out the ROCs. Okay, so I am giving an example like, let's do it with an example. Suppose take me to 2, 2 by 3. Okay, so I am giving an example. X of n
equal to 2 by 3 to the power n un plus minus 1 by 2n un. So in this equation, first of all, we have to find out the Z transform, then ROC and poles and zeros location for x of z. zeros location of x of z. ठीक है, ये तीन मैं निकालूंगा. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू फाइंड आउट द zeros and poles, as well as first of all I have to find out the Z transform. So if I will go for the Z transform, what happened? Z transform. So first of all, I am going to write the equation again. 2 to the power 3 to the power n un plus minus half to the power n un. So here 2 to the power a 3 2 by 3 to the power n un. That means the equation lie in between 0 to infinity. Yes or no? Are you getting that point? un जहां पे है that is unit step function and it is always ranges from 0 to infinity. Am I right? This one. Am I right or not? So, Okay. So now I have to put the Z transform formula. X of Z equal to n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. This is the Z transform formula. And here the equation only lies between 0 to infinity. That is un वहां पे multiply factor है, और जहां पे मेरा un multiplication factor है, किसी चीज के साथ multiply होता है, that means that equation is range from 0 to infinity. So instead of n equal to minus infinity to plus infinity, I will write n equal to 0 to infinity, replace the x of n by this equation. So what we will get? 2 to the power 2 by 3 to the power n. Now we will not write un because I am taking n equal to 0 to infinity plus minus half to the power n z to the power minus n. So now we will expand this. So n equal to 0 to infinity 2 by 3 to the power n, इसको ब्रेक करते हैं, z to the power minus n plus n equal to 0 to infinity minus half to the power n z to the power minus n. Can I write this? Can I write this? Yes or no? yes, sir. Okay. Now I have to arrange the representation of the equation, and it can be written as z to the power n equal to 0 to infinity 2 by 3 into z to the power minus 1 to the power n. Can I write this? Is that clear? Just I am putting z terms inside the bracket and taking the n power common. So that is z to the power minus 1 to the power n. That means z to the power minus n. And in the second portion of the equation, n equal to 0 to infinity
minus half z to the power minus 1 to the power n. Okay, so now look at this equation. If I will compare this equation n equal to 0 to infinity and r to the power n, so the formula is 1 by r. APGP सीरीज, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स दिस पोर्शन टू द पावर 0 प्लस दिस पोर्शन टू द पावर 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 आर टू द पावर n. Okay, so now this can be written by this equation, and the solution for this equation is 1 by 1 minus r, that is from our APGP series you have already studied in math. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में चला आया. नाउ आई एम गोइंग टू गेट दैट equation, put that equation in this formula. So here r can be represented for the first equation, r equal to 2 by 3 z to the power minus 1, and for the second equation r equal to minus half z to the power minus 1. So if I will going to solve this, so what I will get, that is x of z equal to 1 by 1 minus 2 by 3 z to the power minus 1, since 2 by 3 z to the power minus 1 is the r for the first portion of the equation, and for the second portion of the equation is half z to the power minus 1. Okay, so this is the z transform of the following signal. Now if I will elaborate the equation, okay, then what I will get. So now next is I have to find the poles and zeros of that equation, that z transform. Okay, so now x of z is equal to z inverse, that means 1 1 by 1 minus 2 by 3z plus 1 by 1 plus 1 by 2z. So now simplify this, 1 by 3z minus 2 by 3z plus 1 by 2z plus 1 by 2z. So if I will going to solve this, 3z minus 2 plus 2z plus 1. Okay, so these are the equation. Now I have to combine both the terms. Okay, so if I will combining both the terms, I will get 3z minus 2 2z plus 1. So that 3z is multiplied by 2z plus 1 plus 2z will be multiplied by 3z minus 2. So what will be the answer? 6z square plus 3z plus 6z square minus 4z. And I am getting the next one, 3z minus 2 2z plus 1. So in that case 6 that is 12z square minus z and 3z minus 2 2z plus 1. So now z 12z minus 1 and 3z minus 2 2z plus 1. So now my entire equation can be written as z into 12z minus 1, 3z minus 2, 2z plus 1. Now the equation will be
in this form, in this form, numerator y denominator. ठीक है? So find out the poles and zeros. So what are the poles and what are the zeros? Find करो. सर पोल्स है 2/3 और -1/2 और That जीरोज is है 0 और एक 1/2. 2/3 माइनस हाफ और जीरो है 0 और 1/12. ये सबका आया. सबका यही आया ना, पोल्स एंड जीरोस. यस सर. ना मुझे आरओसी निकालना है, तो आरओसी में देखो जीरो के लिए कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया है. ठीक है, आरओसी में कहा है कि देयर विल बी नो पोल्स इन आरओसीज. ठीक है, पोल्स वहां पे है नहीं आरओसी में. सो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पोल्स का वैल्यू है उसके बाहर मेरा या अंदर मेरा आरओसी रहे. ठीक है, सो पोल्स में मैक्सिमम किसका वैल्यू है? There are two values in poles. So which one is the maximum? सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 2/3. हाँ, कितना है? 2/3. 2/3. सो दैट मीन्स 2/3 जो वैल्यू है, आरओसी जो है आइदर इसके अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा. नाउ हम देखेंगे वेदर द आरओसी विल बी इन बिटवीन दैट 2/3. दैट मीन्स यहां से अगर हम जीरो पकड़े, ठीक है, और यहां से 2/3 दैट इज 1 2. So 2/3 will be lie between this. Okay. So 2/3 यहाँ पे. So now हम देखेंगे आरओसी इस पॉइंट के, ये मेरा पोल से इस पॉइंट के अंदर है या बाहर है. ठीक है, सो देखो अगर हम गौर से दोनों वैल्यू को देखेंगे तो देखोगे कि माइनस हाफ जो है वो 1 के अंदर है, 0 और 1 नेगेटिव एक्सिस में यहां पे है. ओके, सो नाउ इन दिस केस क्या होगा? 2/3 यहां पे है, तो ऑलरेडी 0 से 2/3 या 0 से इधर भी -2/3, क्योंकि ये रिंग होगा एक, इसको पकड़ के एक रिंग खींचा जाएगा. ठीक है, इसको पकड़ के जो मैक्सिमम टर्म है, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मतलब उसको से 0 से उसका लेंथ लेके वहां पे हम एक रिंग लेंगे. सो ना उसको डायमीटर पकड़ के एक रिंग लेके तो देखेंगे यहाँ पे -2/3 आएगा. ठीक है, सो नाउ देखो हाफ पोर्शन जो है ये इस सर्कल के अंदर है. दैट मीन्स यहाँ पे जो एक सर्कल के अंदर वाला रीजन है वहां पे कहीं ना कहीं पे एक पोल लाइक कर रहा है. ठीक है, सो नाउ आरओसी क्या करता है? डजंट कंटेन एनी पोल एज पर आवर डेफिनेशन. बट by seeing this equation we have seen that in between this circle there is a pole. ठीक है, मैं इस ग्राफ को ध्यान से समझना. ठीक है, ये पोर्शन मैक्सिमम तुम लोग गलत करते हो. 2/3 इसका मैक्सिमम पोल है, मैक्सिमम. तो मैं नेक्स्ट पेज करता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए. सो पोल्स कहां कहां पे आया? 2/3 और -1/2. तो which one is maximum? This one is maximum. So मैक्सिमम जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, 1 2, तो 2/3 क्या होगा? तो इस पोर्शन पे 2/3. सो यहाँ पे भी सेम थिंग होगा, -1 -2 और यहाँ पे -2/3. सो इस 2/3 को लेके मैं यहाँ पे एक सर्कल कर दे रहा हूँ, रिंग. यहाँ पे रुको,
यहाँ पे मैं एक सर्कल करता हूँ, ठीक है। इमेजिन दिस इज अ सर्कल, ठीक है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट, बट इमेजिन, ठीक है। सो ये 2/3 जो है, ये इसको, ये मैक्सिमम है, तो इसको डायमीटर पकड़ के जीरो सेंटर करके एक मैं रिंग करूंगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आरओसी आइदर इसके अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आया? Yes. यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज, अब आरओसी में मुझे क्या चाहिए? एक प्रॉपर्टी है कि वो रिंग होगा, तो रिंग तो बन चुका है। नाउ ये होगा कि आरओसी आइदर इसके बाहर लाई कर सकता है या अंदर लाई कर सकता है। दैट मींस जेड का कोई भी वैल्यू आके इस सर्कल के अंदर एक साथ होगा या बाहर होगा। और आई कैन से इन अनदर वर्ड के आरओसी मतलब इस सर्कल के बाहर मुझे इसका इक्वेशन मिलेगा या अंदर इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो, दूसरा पोल्स कहां पे है? -½ पे है। सो -½ यहां पे है। तो यहाँ पे अगर -½ है, एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ आरओसी, दैट इज आरओसी डजंट कंटेन एनी पोल। और देखो ये रिंग के अंदर ही पोल मेरा ऑक्युपाई हुआ है, तो ऑब्वियसली ये रिंग के अंदर कोई भी आरओसी नहीं रहेगा। दैट इज आरओसी इज नॉट इनसाइड दैट रिंग। सो माय आरओसी विल बी आउटसाइड ऑफ दैट। और अगर आरओसी आउटसाइड ऑफ द रिंग है, तो ऑब्वियसली 2/3 से ग्रेटर होगा आरओसी का वैल्यू। सो माय आरओसी, दैट मीन्स, सॉरी, यहाँ पे मॉड नहीं होगा, आरओसी यहाँ पे जेड मॉड होगा, क्योंकि सॉरी, ब्रैकेट में मॉड, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों को मुझे डायमीटर पकड़ के सर्कल बनाना है। जेड must be equal to sorry, greater than 2/3. Got it? Got it? Yes, sir. Okay. So now again I am giving an example, ठीक है, and parallelly you have to solve this, ठीक है? Parallelly you have to solve this. Take x of n equal to half to the power n un plus 1/3 to the power n un. So मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइंड z ट्रांसफॉर्म, ROC and poles and zeros of x of z. So do this. Do this.
कितना है z ट्रांसफॉर्म? सो x ऑफ n इक्वल टू हाफ टू द पावर n un। यहां से मैं z ट्रांसफॉर्म निकालने का एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? तो z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? z ट्रांसफॉर्म, so first of all I have to put this in the formula, x of z equal to n equal to minus infinity to plus infinity, x of n z to the power minus n. Now since this is multiplied with un, so my sequence will be from 0 to infinity. So n equal to 0 to infinity 1 by 2 to the power n z, sorry, x plus 1 by 3 to the power n z to the power minus n. So now n equal to 0 to infinity half to the power n z to the power minus n plus n equal to 0 to infinity 1/3 to the power n z to the power minus n. So if I will rearrange the equation or arrange the equation, so it will get z to the power minus 1 to the power n plus n equal to 0 to infinity 1 by 3 z to the power minus 1 to the power n. So again we know that n equal to 0 to infinity, ठीक है, r to the power n can be written as 1 by 1 minus r. So this यहाँ पे r ये है और यहाँ पे r ये है, तो 1 by 1 minus half z to the power minus 1 plus 1 by 1 minus 1/3 z to the power minus 1. So now we will solve this, that is 1 by 1 minus 1 by 2z plus 1 by 1 minus 1 by 3z. So now 2z by 2z minus 1 plus 3z by 3z minus 1. So now if we do the further solution, that is 2z into 3z minus 1 plus 3z, 2z minus 1. So now 6z square minus 2z plus 6z square minus 3z by 2z minus 1, 3z minus 1. So now 12z square minus 5z, 2z minus 1, 3z minus 1. So now z 12z minus 5, that is 2z minus 1, 3z minus 1. So the entire equation will look like this. X of z equal to z 12z minus 5 and यहाँ पे क्या है 2z minus 1, 3z minus 1, 2z minus 1, 3z minus 1. सबका z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये आया है। Yes, sir. Okay. 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 So now from that equation I have to find out the poles and zeros. So what are the poles? 1 by 1 1 by by 3 2. and 1 by 2. 1 by 2 and 1 by 3, and zeros, that is 0 and 5 by 12. ठीक है?
So now we are going to find out the ROC. So again ROC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to imagine this axis. ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 और 1/3 से 3 में लार्जर वैल्यू किसका है? 1/2. 1/2. So if that is 1 1 1 minus 1 minus 2, so 1/2 will lie between this. So इसको पकड़ के अगर हम एक सर्कल बना दे, ठीक है, तो आइदर आरओसी विल लाई बियॉन्ड द सर्कल और इनसाइड द सर्कल. सो नाउ 1/2 यहाँ पे है और 1/3 मेरा इस पोर्शन पे कहीं पे होगा. ठीक है, तो एज पर द कंडीशन दैट आरओसी डजंट कंटेन एनी पोल्स, दैट मींस इनसाइड this ring ROC will not be there. So ROC Z का वैल्यू ऑब्वियसली शुड बी ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए. ठीक है, नाउ यहां से एक शॉर्टकट, ये मैं चेक कर सकता हूं मेरा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सही है कि नहीं. ठीक है, उसको मैं कैसे जानूंगा? देखो, पहला जो इक्वेशन था, गौर से, हाँ, पहला जो इक्वेशन था वहां पे देखो un मल्टीप्लाई था. दैट मींस इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव हैंड साइड है. ठीक है, un मल्टीप्लाई है. और सेकेंड इक्वेशन में भी un मल्टीप्लाई है. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी un मल्टीप्लाई है. सो सिंस दोनों इक्वेशन में देखो आरओसी जो है रिंग के बाहर है. ठीक है, सो व्हेनेवर your equation will be multiplied with un, the ROC will be outside the ring, or ROC will be Z maximum value of poles. तो यहां पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 1/2. लास्ट एग्जांपल में इससे पहले वाले एग्जांपल में मैक्सिमम वैल्यू किसका था? 2/3. सो दैट इज आरओसी विल ऑलवेज will be outside the ring, that is z mod z greater than equal to maximum value. अगर आरओसी मेरा इस साइड रहा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रहा, तो क्या होगा? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड के लिए आरओसी जेड लेस देन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स. ठीक, इसी का उल्टा हो जाएगा. ओके, गॉट इट? गॉट इट? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ और एक शॉर्टकट है कि मेरा जेड ट्रांसफॉर्म सही है कि नहीं. तो देखो, यहाँ पे पहला जो इक्वेशन था, पहला जो एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या था? दैट इज समथिंग, दैट इज एक वैल्यू था वो यूएन से मल्टीप्लाई था, एक वैल्यू था यूएन से मल्टीप्लाई था. सेकेंड एग्जाम्पल में भी एक वैल्यू था वो यूएन से मल्टीप्लाई हुआ और एक वैल्यू था वो यूएन से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अगर मेरा यूएन से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग दैट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, ये इस फॉर्मेट में था ना, टू द पावर एन, टू द पावर एन, टू द पावर एन, टू द पावर एन. ठीक है, तो अगर मेरा कुछ वैल्यू दैट इज ए टू द पावर एन यूएन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 माइनस ए मल्टीप्लाइड विद z टू द पावर -1. ये इसका एकदम
फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है कि अगर ए टू द पावर समथिंग है, ए टू द पावर एन है, समथिंग टू द पावर एन है, और वो यूएन से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म उसका होगा 1/1 माइनस ये जो वैल्यू, ये a मल्टीप्लाइड विद z टू द पावर -1। नाउ मैं इसी एग्जांपल को इस फॉर्मूला के वाइज चेक करके देखूंगा कि ये सही है कि नहीं। a टू द पावर n un इसका z ट्रांसफॉर्म है 1/1 माइनस a z टू द पावर -1, ठीक है। नाउ हियर माय इक्वेशन इज x of n equal to half to the power n un 1/3, and unfortunately you can't apply it in the exam, ठीक है। तुमको इस ट्रेडिशनल फॉर्मूला, ट्रेडिशनल वे में तुमको z ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, लाइक योर कॉन्वोल्यूशन पार्ट, ठीक है। सो एंड इन केस ऑफ एमसीक्यू or in case of short question that is having 1 or 2 marks, you can apply this, but not in case of subjective type questions like long answer type question. Okay, so now x of n is given by this, so I can say it can be represented by an un and it can be represented by bn un, b to the power n un. So as per the formula, ठीक है, so its z transform can be written as 1/1 minus this part to the power n, so half z to the power -1 प्लस यहाँ पे a का वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3, so 1/1 minus 1/3 z to the power -1, so within a second you can find out the z transform, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है, टू फाइंड आउट द पोल्स एंड द आरओसी। ओके, सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरीज? एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज फ्रॉम एनीवन? सर हाँ बोलो। सर वो वाला स्लाइड थोड़ा ये कीजिए, वो जिसमें सर आप ड्राइंग बनाए थे। दैट वन? यस सर। बोलो। सर यहाँ पे सर जो और 1/2 को सर पोल रखते हुए सर सर्कल ड्रॉ किए। हाँ, वो कैसे? तो सर इसमें सर हम लोग 1/, बोलो। रख के सर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अंदर भी तो आरओसी हो सकता है ना, क्योंकि नहीं, आरओसी का कंडीशन क्या है? आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल्स। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम टर्म 1/2 और 1/3 में मैक्सिमम वैल्यू किसका है? 1/2 होगा। 1/2, सो 1/2 को डायमीटर लेके हम एक सर्कल बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? रूल है क्या सर कि 1/2 को ही सर मैक्सिमम जो होगा सर उसी को करना होगा? मैक्सिमम, ये प्रोसीड्यूर। यस सर। मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पोल्स का वैल्यू, ठीक है। सो देखो, ये जो डायमीटर है इसको लेके हम एक पोल्स बना रहे हैं, आरओसी बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ देखो, दैट मीन्स आप सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो गया, तो यहाँ पे देखो ये जो एंटायर रीजन है ये दो हिस्सों में बट गया। एक है सर्कल के अंदर वाला पोर्शन, एक सर्कल के बाहर वाला पोर्शन। तो देखो 1/3 जो है वो क्या करेगा, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यस और नो? यस और नो? 1/3 का पोजीशन कहां पे होगा? इस लाइन पे, दैट इज इनसाइड 1/2, ये रेंज के अंदर होगा। समझ में आया? यस सर। ओके, सो दैट मीन्स सर्कल के बाहर वाला पोर्शन में 1/3 लाई नहीं कर रहा है, सर्कल के अंदर वाला पोर्शन में 1/3 लाई कर रहा है।
and as per our condition for ROC, the ROC doesn't contain any poles, so that means ROC will lie outside the circle. In maximum cases where u of n is multiplied, वहां पे मेरा ROC outside the circle होगा. That means मेरा अगर un के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आरओसी ग्रेटर देन होगा. आरओसी ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने लिख दिया आरओसी ग्रेटर देन होगा. ठीक है. एंड अगर तुम्हारा सपोज कोई इक्वेशन आता है माइनस यू ऑफ, लेट इट बी, एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहा था, माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन. इन दिस केस आरओसी जेड इनसाइड द सर्कल. ठीक है. सो अब तुम बोल ही दिए तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है. ओके. सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल. लेट इट बी x of n इक्वल टू 1/2 to the power n u of minus n. ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया. ठीक है. सो un का मतलब क्या है? un दैट इज 0 टू इंफिनिटी. ठीक है. सो u ऑफ माइनस n कहां से लाई करेगा? माइनस इंफिनिटी टू 0. जस्ट टाइम रिवर्सल. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म. 1 by x of z equal to n equal to minus infinity to plus infinity 1 by 2 पहले मैं z ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन लिख ले रहा हूँ. x of n z to the power minus n. दैट मीन्स अब क्या होगा? n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 0 हाफ टू द पावर n z टू द पावर माइनस n. सो नाउ देखो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू 0 है, तो इसको अगर मैं 0 से इंफिनिटी करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिमिटेड है, वो फॉर्मूला है दिस मच, इसी फॉर्मूला में मैं पुट करूंगा. ठीक है. तो इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए मुझे 0 से इंफिनिटी चाहिए, बट मेरे पास है माइनस इंफिनिटी टू 0, तो इसको मैं 0 से इंफिनिटी करूंगा तो क्या करूंगा? ये सबको माइनस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज इसका इन्वर्ट कर दूंगा. दैट इज n हो जाएगा माइनस n हो जाएगा n. सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/2 टू द पावर माइनस 1 इंटू z टू द पावर n टोटल. ठीक है. सो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 z to the power minus 2 z to the power n. So now what will be the equation? 1 by 2z. ठीक है. सो नाउ यहां पे देखो, अगर मैं इसको पोल्स एंड जीरो में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? पोल्स एंड जीरो में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? x of z, दैट मीन्स इसका पोल्स कहां पे होगा? 1 minus 2z equal to 0. So 1 by 2z equal to 1. So z equal to half. So now ये हाफ, इसका एक ही वैल्यू है, सो हाफ यहां से. ठीक है. सो हाफ अगर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इन दिस केस मैंने एक बात कहा था, अगर राइट हैंड साइड है तो आरओसी जो है वो ग्रेटर देन होगा. ये एक सीक्वेंस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस. सो आरओसी लेस देन होगा. व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? इज इट इज. ठीक है. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाफ. तो आरओसी जेड लेस देन हाफ. सो अगर यहाँ पे सर्कल आ गया एक, तो ये सर्कल का जो वैल्यू है
ये इस सर्कल के अंदर लाई करेगा और यहाँ पे इसका आरओसी आएगा। समझ में आया? यस सर। ओके, सो देखो जहां पे मेरा पॉजिटिव है आरओसी सर्कल के बाहर, पॉजिटिव सीक्वेंस। जहां पे मेरा नेगेटिव है दैट मीन सीक्वेंस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पे आरओसी मेरा सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, तो एनीवन हैज एनी डाउट? इफ नो देन आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास because already I have taken 16 minutes from the next class. किसका क्लास है अभी? हेलो, हेलो, अभी तुम लोगों का कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है अभी? सर देवज्योति सर का क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम देवज्योति सर को बोल दे रहे हैं। ठीक है, ओके, सो हैव यू एनी डाउट?